नहीं पूछ लेता हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही मतलब ओके, so we should be comfortable now. So I've started the recording. So welcome to this assessment program. Before we get started with the assessment, I want to set some of the rules. Okay, the rules are that we will take see, when we look at assessment or any exam, it is to be understood as it's just a reflection, nothing right or wrong about it. ठीक है, हम लोग जितना भी एग्जाम देते हैं, हर एक एग्जाम में 100 में 100 नहीं लाते हैं, राइट? और 100 में 100 नहीं लाना इज नॉट समथिंग विच सर्टिफाइज कि हाँ आप गलत हो, है ना? इट टेल्स यू दैट यस, आपको जिस एग्जाम में आप अपीयर हुए थे, अगर आपको 90 मार्क्स आया तो योर प्रिपरेशन वाज 90% राइट. इफ यू गॉट 80, योर प्रिपरेशन वाज 80%. अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है किसी एग्जाम में, तो वो होता है कि भाई उस बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं थी. ये नहीं कि वो बच्चा गलत था, तैयारी अच्छी नहीं थी. दैट इज हाउ वी शुड टेक इट. तो आई टेल यू 2 स्टोरीज क्विकली. आपने पुराना वीडियोस देखा होगा तो उसमें भी ये सुना होगा. सिमिलर स्टोरीज आई टेल यू. वन इज अबाउट माई सेल्फ. ओके, एक तो मेरा स्टोरी है कि जब हम इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे थे ना, तो मैं बहुत ही मतलब नहीं होता हम्बल बैकग्राउंड से हूँ. मतलब मैं बहुत कोई अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, ठीक है? तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि देखो भाई, तुम लोग तो 5 बच्चे हो, मतलब हम लोग 5 भाई बहन हैं. तो उनका कहना था कि तुम अगर compete कर पाते हो इंजीनियरिंग में, मतलब मेरा इंजीनियरिंग में जाने का प्लान था, तो इंजीनियरिंग में compete कर पाते हो तो जाना, डोनेशन में हम नहीं भेज पाएंगे, मेरा औकात नहीं है, ठीक है? तो हमको compete करके ही जाना था, वही मेरा मजबूरी था, चाहे जितना साल भी लग जाए. तो पहला बार दिए, नहीं हुआ. दूसरा बार दिए, नहीं हुआ. और ऐसा नहीं कि एक एग्जाम भी नहीं हुआ, जितना भी IIT रुड़की जितना भी तरह का एग्जाम हो सब दिए, सब में फेल किए अच्छे से. तो उससे क्या हुआ, लेकिन ये पता था कि हाँ ठीक है, मतलब फेल करना इज ओके. मतलब मैं तैयारी नहीं था, तो 1-2 बार किए, तीसरा बार भी फेल किए. 4th अटेम्प्ट में जब दिए तो तब जाकर के क्लियर किए और 2 जगह पे सिलेक्शन हुआ. So basically the message that I'm trying to give here is कि अगर कोई चीज के लिए आप तैयारी करते हो तो डोंट एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट, बिकॉज योर बेस्ट रिजल्ट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ बेस्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है? और अगर कभी नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टूडेंट गलत हो, आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई. दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. ठीक है? सेम दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ हमेशा उसेन बोल्ट का. अगर आपने सुना होगा, उसेन बोल्ट इज द फास्टेस्ट मैन एवर बीइंग बोर्न ऑन अर्थ. जमैका का स्प्रिंटर था, जमैका का रनर है, मतलब बेसिकली वो 100 मीटर 200 मीटर में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है. आप कभी गूगल में सर्च करेंगे तो उसेन बोल्ट का पता चलेगा. तो ही हैज वोन आई थिंक 6 to 8 ओलंपिक मेडल्स गोल्ड. और इसका मतलब है 6 बार वो ऐसा दौड़ा जबकि वो ही गॉट द लीस्ट टाइम फॉर दोज रेस और दोज इवेंट्स. लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो सिर्फ 6 बार दौड़ा था, वो शायद 600 बार या 6000 बार या 6 लाख बार दौड़ा होगा. अकेले से भी दौड़ता था, अलग अलग इवेंट में दौड़ता होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरी टाइम वी परफॉर्म, it is a reflection. It tells you how prepared you are, what you have done good, where you have opportunity for improvement, है ना? So we'll keep that in mind, not only for this assessment. This is just more of a learning for life. कि आप जो भी करते हो हर जगह पे आप ये मत सोच के रखो कि हमेशा अपने आप को परेशान नहीं करो ये सोच के कि मेरे को इसमें एकदम सबसे ज्यादा लाना है. नहीं. When you go for the एग्जाम से पहले तक, असेसमेंट के पहले तक जो है आप तैयारी करते रहेंगे. When you go for the exam, that time you will say to yourself, let's see how I'm able to do. It should be like क्या बोलते हैं, खुद को चैलेंज करें कि देखते हैं आज कैसा होता है. ये मत नहीं सोचते कि आज हमको 100% लाना है. Because when you put that pressure on yourself, your chances of making mistake is more. ठीक है? तो ये असेसमेंट तो छोटा मोटा चीज है. आज असेसमेंट देंगे, आज मान लिया आपने बिगिनर लेवल का क्लियर कर दिया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा. नहीं किया 1 महीने के बाद कर देंगे तो घर की बात है, राइट? आप लोग तो मेरा बच्चा हो, आप लोग तो मैं अपना बच्चा बोलता हूँ. तो आज वो तो ये तो उतना बड़ा चीज नहीं है. लेकिन इन फ्यूचर ऑल्सो when you go for certain exam or any competitive thing, or in that examination hall, when you start that exam or assessment, you will just tell yourself, let's see how I'm able to do today. सिर्फ देखेंगे. I'll not pressurize myself by saying कि नहीं आज तो एकदम
तोड़ फोड़ मचा देना है, नहीं, वैसा नहीं सोचना है। आज हम ठंडे दिमाग से एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ठंडा दिमाग होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो Yes. ये आपका स्टोरी था। आप लोग को ये सर्टिफिकेट, आगे का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट एक्सपर्ट जो भी मिलना हो तो मिलते रहेगा। आप लोग कहीं जा नहीं रहे हो, और आप मेरे साथ 2 महीना क्लास कीजिए या 2 साल क्लास कीजिए, पैसा तो एक दिन लेंगे, तो इसीलिए Yes. कोई टेंशन नहीं है उसके लिए, है ना। तो इसीलिए उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब एकदम ठंडे दिमाग से इसको असेसमेंट को देंगे। अब देखते हैं कि इस असेसमेंट में क्या क्या है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने पहले का जो असेसमेंट हुआ उसका वीडियोस देखा होगा, एंड यू वुड हैव बिल्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या होता है। सो आई जस्ट क्विकली रन थ्रू दैट। देयर आर 4 सेगमेंट्स, ठीक है। पहला सेगमेंट Yes. में यू हैव टू शेयर 5 वर्ड्स, एंड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ दैट एंड share that. Like we do in the classes, right? We share 2 words. Here we are sharing 5 words. You can try being more organized. आप अपना एक पेन पेपर लेके रखिए, जैसे मैं रखा हूँ, है ना। और जो वर्ड्स आपने बोलना है वो आप लिख लीजिए कि टुडे माय वर्ड्स आर दीज, एंड देन यू कैन गो ऑन टॉकिंग। तो उससे क्या होगा कि Yes. यू विल नॉट बी लॉस्ट कि इसने क्या सोचा है। एंड वो उसमें उसके लिए 25 पॉइंट्स रहेगा। वाला सेगमेंट जो 5 वर्ड्स वाला है, उसमें आपका वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, करेक्टनेस ऑफ सेंटेंस, और इसको एक चीज बोलते हैं और मॉड्यूलेशन, कि आप जब बोल रहे होते हैं, हाउ ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड यू आर। स्लोली बोलेंगे, जल्दी नहीं है, मारा मारी नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है ना। तो वो सभी आपका परफॉर्मेंस के ऊपर 25 पॉइंट्स है। एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक, हाउ थॉरो यू आर, आपको उस हिसाब से स्कोर मिलता है उसमें, ठीक है। और जहाँ पे हम असेसमेंट के बाद वो उस सेगमेंट को खत्म होने के बाद आपको बताएंगे आपका क्या स्कोर था, कहाँ पे क्या सही गलत हुआ और क्यों इतना मार्क्स दिया गया है। तो कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई बेईमानी नहीं होगा, ठीक है। दैट इज वन। सेकेंड सेगमेंट इज वेयर यू विल प्रेजेंट अ टॉपिक, कि भाई आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, एंड व्हेन यू प्रेजेंट अ टॉपिक इट हैज टू हैव 3 कंस्ट्रक्ट्स इनटू इट। 3 चीजें होंगी उसमें। पहला होगा वेयर यू सेट द कॉन्टेक्स्ट, दूसरा होगा वेयर यू विल ऐड सम मोर डेटा पॉइंट्स अराउंड इट। जैसे मान लिया आप कोई टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको मान के चलना है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता उसके बारे में, यू आर ट्राइंग टू एडुकेट मी। तो सबसे पहले आप किसी को कोई चीज बताते हैं, मान लिया जाए कि आपने मुझे इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, तो आप शुरू नहीं कर दोगे भाई चलो आज ये पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करोगे। आप बोलो कि इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे दो, देखो इंग्लिश पढ़ो तो ये होगा, ये होगा, ये तुम्हारा करियर ऐसे बनेगा, भविष्य ऐसे बनेगा, ये फायदा होगा, तुम्हारा लाइफ सुधरेगा, जो भी, राइट। दैट इज अ डेटा एलिमेंट ऑफ इट, जहाँ पे कि आप आपने जो बोला कि करना क्यों जरूरी है, उसका सपोर्टिंग फैक्ट्स है वो, ठीक है। एंड देन द थर्ड सेगमेंट इज वेर यू कंक्लूड, जब बोलते हो कि अच्छा इतना चीज जो बताया उसका मतलब ये है भाई, ठीक है। और दैट हेल्प्स टू डिराइव द एक्शन प्लान। मतलब आप देखेंगे किसी टॉपिक के बारे में बात करते हो तो लोगों को याद रहता है शुरू का, और लोगों को याद रहता है लास्ट का, जब आप कंक्लूड कर रहे हो तो बीच का जितना डेटा आप दे रहे हो वो उस समय समझाने के लिए होता है, वो भूल जाता है आदमी जिसको भी समझाता हो, ठीक है। इसीलिए when we talk about topic you always have to go in that structure where you set the context, give some more data points, and then you conclude towards the end. तो आपको वो स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। दैट इज हाउ यू कैन से दैट माय परफॉर्मेंस वाज बेस्ट और बेटर, एंड दैट इज व्हाट विल रिफ्लेक्ट इन योर स्कोर आल्सो, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा सेगमेंट, उसमें भी 25 पॉइंट है, ठीक है। एंड द थर्ड सेगमेंट इज वेयर आई विल गिव यू अ टॉपिक, बट द टॉपिक विल बी ऑफ माई चॉइस बेस्ड ऑन थिंग्स दैट यू लाइक। मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या क्या पसंद है, उसमें से रिलेटेड टॉपिक चूज करूंगा, ताकि यू यू कैन आई मीन यू कैन फील हैप्पी शेयरिंग इट, राइट। मतलब ऐसे आपको हम ऐसे रैंडम बोले अपने पसंद का कोई टॉपिक बोल दें, क्या कीजिएगा। तो हम आपसे पूछेंगे भाई आपको क्या क्या चीज पसंद है, उसमें से एक टॉपिक चूज करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड सेगमेंट हो गया, उसमें 25 पॉइंट है। और हर एक जगह पे जहां भी आप जो बोलते हैं, सिंस आवर फोकस इज ऑन इंग्लिश स्पीकिंग, तो हर जगह पे आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कितना कंफर्टेबली बोलते हैं। जल्दी कोई नहीं है, यू कैन बी लाउड बट यू नीड टू बी स्लो। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, if I go like a super fast train without a break or without a pause, you will not make head or tail out of it. तो थोड़ा स्लो ही जाएंगे, जहां पे जोर डालना है वहां पे जोर डाल के बोलेंगे उस चीज को, है ना। जो वर्ड बोलने में ज्यादा मजा आता है, जो इम्पैक्टफुल वर्ड है उस पर थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे। मतलब देखिए उतना परेशान नहीं होना। मेरा कहने का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना है, जैसे हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं स्लो बोलने का, क्लियर बोलने का, प्रोनाउंसिएशन सही करने का, सेंटेंस सही होने का, तो हर एक सेगमेंट में वो होगा। एंड द फोर्थ सेगमेंट विल बी मोर लाइक
जनरल डिस्कशन, जहां पर where you and I will talk कि भाई कोई कोई टॉपिक पकड़ के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो दैट आल्सो विल हैव 25 पॉइंट्स, सब मिला के 100 पॉइंट। 100 पॉइंट में इफ यू स्कोर मोर देन 50 यू यू क्वालिफाई फॉर गेटिंग अ बिगिनर लेवल सर्टिफिकेट। आपको मैं एक बता दूं फैक्ट कि पूरा इंडिया में सारे ग्रेजुएट्स को खड़ा कर देंगे ना, उसमें से मुश्किल से 10% बच्चे होंगे जो बिगिनर लेवल क्लियर कर पाएंगे, ठीक है? मेरे बच्चों ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है, तो आई एम श्योर कि आपका लेवल काफी अच्छा है। आज अगर कर लेते तो बढ़िया, नहीं करते तो 2 वीक के बाद कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं है आपका। तो बट आई एम सेइंग द स्टैंडर्ड वही है कि बिगिनर लेवल सर्टिफिकेट भी इज नॉट समथिंग दैट यू कैन नॉट फील प्राउड ऑफ। ओके, तो 50 पॉइंट्स, 50 to 70 is beginner, 70 to 85 is intermediate, 85 to 100 is expert or professional. I'm not expecting any of my student to clear professional level certificate right now, क्योंकि अभी हमने जर्नी शुरू किया है, we are learning a lot of things going on. Intermediate, again, if we get that, nothing like it, but I'm not thinking on those lines कि भाई चलो ठीक है, एक बार beginner level at least we should say कि हाँ we are professionally good enough as a speaker, English speaker, ठीक है? Intermediate expert जो है आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो टेंशन का बात नहीं, दिस इज सेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट, ठीक है? सो ऑल दैट सेड, I'll pause. We'll start the assessment now. Ready है? Okay, sir. चाहे तो पानी और चाय जो भी पीना है पी लीजिए। No, sir. ओके ओके, ऑल राइट। तो चलिए अभी let's start with section 1, segment 1, which is you sharing 5 words. So I'll go on mute. Yes, sir. And I'll keep on noting down my observation in this notebook, ठीक है? तो आप स्टार्ट कीजिए। So today's my 5 words are language, structure, situation, And journey and desire. My first word is language. Mind your language. Otherwise, you don't know what will I do. Ram says to me, please speak English language because English language is very important for in this generation. I want to speak English, but I know it very well that English language is very tough. So what did I do? And I don't think Hindi language is bad, but English language is very important for in this generation. And my second word is structure. The structure of this building is not good. I want to the structure of your body just like robot because robot is very attractive for me. And the structure of new Parliament of India is designed by Vimal Patel. The structure of this sentence is not proper. So please try to understand in this situation. I cannot do nothing. Answer my third sentence is situation. We cannot do anything in this situation because it is very critical. I don't think in this situation that person was happy. Situation always hurts me, so I can't do anything in this situation. Situation make us helpless, so in this situation, please be patient. And my fourth sentence is journey. Journey of any successful person is not very well, but he don't give up, hanging in there. Then last, he achieved very big goal in his life. And I want to journey in America because in this generation, America is very developed country. All people wants to journey in India because India is a tourist place. In present time, you are going to Paris. So happy journey. And my fifth
What is desire? Hmm. Man should limit his desire. Hmm. I could not fulfill his last desire because it was not in my control. Hmm. When I shall become Prime Minister of India, I have to serve our country, and it's my desire. Hmm. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो आपके लिए तालियां, बोल रहा हूँ आपके लिए तालियां। आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। यू I mean, as expected, right? You are one of my brightest students in this class. That's how I look at it. तो बीच में जब आप डिसकंटिन्यू कर गए थे Thank तो you, मुझे sir. थोड़ा टेंशन हो गया कि रागनी कहाँ चली गई। तो coming back to the assessment, first of all, your voice clarity is very good. आप जो भी बोलते हो एकदम साफ सुनाई पड़ता है, ठीक है? So that makes it good for the audience. Because no, you need to be heard. If you keep murmuring to yourself, अगर धीरे धीरे फुसफुसा के बोलेंगे तो किसी को नहीं सुनाई पड़ता है. That kills the communication. So that you should be given credit for your voice quality and the clarity of sound. Second thing is, I have noticed or have observed that you have toned down your speed. Earlier you used to be very fast. फटाफट फटाफट बोल दिया. Now, as I have suggested, that you have brought the speed little down. Matlab, where you are keeping some gap between words, that makes it more effective. So very well done there also. Okay. And your sentence formation has always been very good. मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको हम सिखाए हैं बोल करके. आपका already जो है sentence formation or command over English was much better than the average students. Okay. मतलब Yes. जब आपकी इतना बड़ा मैं था तो मेरा तो आपके लेवल का था ही नहीं बिल्कुल. मतलब आपसे आपका 10% होगा शायद से या 5%. तो यू आर वेरी गुड देयर. ओके. सो दीज थिंग्स यू शुड गेट क्रेडिट फॉर. नाउ couple of things where I felt that where we had some opportunity for correction. Okay. तो आपने कहा शुरू के वर्ड में important for in this generation. So you will not say important for in. You will say important for this generation or important in this generation. आप ये वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, then you'll know what I'm pointing at. Okay. एक छोटा सा बहुत ही माइनर सा गलती हो रहा था बार बार when which you realize in the fifth word. Instead of saying by sentences instead of you use sentences instead of words. You said my third sentence is, and then you use it. Instead you have to say my third word is and the sentences are. वो छोटा सा गलती था. थर्ड में और फोर्थ में हुआ गलती वो, बट फिफ्थ में आपने वो कैच कर लिया तो उसको आपने रिकवर कर लिया. ठीक है. which is good. I mean, see, communication का ये भी important part होता है. गलती हो सकता है, but as soon as you realize, you can correct it, and that's a very smart move. So I'll give you actually point for that. क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं, बोलने के क्रम में we can go wrong, and as soon as you realize how smartly you are kind of recovering from that's what makes it accurate. Yes, sir. आप देखेंगे बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं ना, कुछ बोला, कुछ गलत वर्ड प्रोनाउंस कर दिया. I'm sorry, let me rephrase myself, and then they say something different after correcting it. So that's a smart communication. तो गलती होना ऐसा नहीं कि मेरा एक भी वर्ड गलत नहीं हो, गलत हो सकता है, but how soon you are catching it and recorrecting it, that is what makes the communication more effective. So this was second observation. Third thing था, you said I want to journey America. So you don't say I want to journey, you say I want to go to America or I want to travel to America. Likewise, you said I want to Yes, journey sir. to India. तो जर्नी टू नहीं होता है. आई वांट टू जर्नी टू इंडिया या आई वांट टू जर्नी इंडिया नहीं होगा. आप हमेशा बोलेंगे आई वांट टू ट्रैवल टू और आई वांट टू गो टू. दैट वुड बी अ मोर एक्यूरेट सेंटेंस. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो जिसके लिए कि मैं हमेशा जोर डालता रहता हूँ, दैट इज प्रोनाउंसिएशन. आपका प्रोनाउंसिएशन आई वुड से 90% करेक्ट था. एक जगह पे हमको लगा कि थोड़ा सा करेक्ट करना है, वेयर यू सेड
Paris. Paris. You'll not say Paris, you'll say Paris. Paris है वो. Paris, yes, sir. Paris. ठीक है. तो लेकिन आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था इस सेक्शन में. तो जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, जिससे आपने जो थर्ड सेंटेंसेस फोर्थ सेंटेंसेस बोला था, आपने उसको फिफ्थ वर्ड में कैच करके करेक्ट कर लिया, तो आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू नेगेटिव पॉइंट. सो net आई एम गोइंग टू डिडक्ट 2 plus 1 plus 2. So total I'm going to deduct only 5 points out of 25. So I'm giving you 20 out of 25 in this segment. Okay. So this is the easiest of all the segments, and I have seen everybody scoring good here. But without doing any comparison among my students, my kids, whatever I call it, you have scored one of the highest rank score in this segment so far. Okay? Yes, sir. All right. तो ये बहुत बढ़िया था. अभी अब segment 2 है, उसमें you have to talk about a topic of your choice. जो भी आपने सोचा होगा, जो भी आपने प्रिपेयर किया होगा, जिसके बारे में हमको मजा आता है, जो भी, you'll just follow the structure that I said. जहाँ पे कि आप ये मान के चलिए सामने वाला गधा है, उसको कुछ नहीं आता है. ठीक है, आप मुझे समझा रहे हो, आप मुझे एडुकेट कर रहे हो, जिस भी बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, so I'll listen to you and I'll keep recording or noting down my observation. आप चाहे तो थोड़ा पानी वानी पी के थोड़ा बैटरी चार्ज कर लीजिए, मतलब थोड़ा गला साफ हो या जो भी कंफर्टेबल हो जाए. Okay, you can start when you're ready. Okay. Yes, sir. So today's my topic is exercise. Exercise is an important for our healthy body. It is very important for our physically and mentally fit. It gives you to more confident. Regular exercise keeps us healthy and confident. Regular exercise prevents us from many diseases. There are so many forms of exercise like cobra stretch, push-up, chest fly, child pose, etc. And we can do exercise at park and playground. Exercise is also important for our mental health. Exercise should take daily, because and so everyone should take exercise daily, and now exercise is a part of my life. Thank you, sir. Okay. All right. तो आपने काफी स्मार्टली किया इसको. आपने तीनों सेगमेंट, जो तीनों पोर्शंस थे इसके, कि कॉन्टेक्स्ट सेटिंग भी आपने किया, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, इट हैज टू बी डेली पार्ट ऑफ आवर रूटीन एंड ऑल दैट. ओके, वो आपने अच्छा किया. देन यू एडेड अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू इट, डाटा पॉइंट्स टू इट, वेयर यू टॉक्ड अबाउट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस, क्यों चाहिए, क्यों करना चाहिए. देन यू कंक्लूडेड. योर कंक्लूजन वाज, आई वुड से, गुड. It could have been a little more better also. क्योंकि क्या होता है ना, जब कंक्लूड करते वक्त में you have to spend, maybe like it's like a very strategic move. मतलब जब कंक्लूड करते हो, you will emphasize on the action plan. मतलब आप बोलोगे, so after you have heard all about exercise, my only request to you would be, or we should make sure that we are exercising at least 30 minutes a day. We must make sure that we go to park. We must make sure that everybody in the family follows a very disciplined routine to get maximum out of it when it comes to ensuring mental and physical health. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट का जो कंक्लूजन होता है ना, वही रह जाता है, बाकी सब उड़ जाता है. आफ्टर दैट पर्सन इज गॉन, राइट. आपने जितना कुछ मुझे बताया, उसमें लास्ट का जो 2 लाइन में अगर आप हमको ये बोल देंगे कि भाई, अगर आपको अपना हेल्थ का गारंटी लेना है तो ये सब गलती कभी मत करना. So that is what becomes my takeaway. So conclusion is very important. Context makes you relevant. जब आप बोलते हैं कि आज हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं, तो that person to draw the attention, कोई आपकी बात क्यों सुनेगा, समझ रहे बात को, कोई किसी पास टाइम नहीं होता, राइट. So when you're talking about something, you have to first get your audience glued to you, कि हाँ भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है, बोलने वाली है मेरे लिए. So that is where context plays a role.
the middle part of the topic is where you are kind of strengthening your viewpoint by giving some data. वो सिर्फ है कि ऑडियंस को जोड़ के रखना है, एक बार जुड़ गया फिर जोड़ के रखेंगे थोड़ी देर तक, इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि लगे कि हाँ आप नॉलेजेबल हो, आपको पता है उस बारे में. एंड व्हेन यू कंक्लूड, दैट इज व्हाट इज अ टेक अवे और एक्शन प्लान, कि अच्छा इतना कुछ समझाने के बाद में भाई ये तो जरूर करना है. ठीक है. सो ओवरऑल योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड इन दिस वन. ओके, अगेन आई विल नॉट डू अ कंपैरिजन विद एनीबॉडी, बट यू डिड वेरी वेरी गुड. ओके, अभी इसमें देखते हैं क्या क्या फीडबैक था. तो एक एक था, आपने एक जगह पे कहा दिस इज गुड फॉर आवर फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ. एक बार ये वीडियो जब आप देखेंगे देन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो यू डोंट से फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ, यू से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ठीक है, दैट एक्सरसाइज वेरी गुड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. जब ये वीडियो मैं डालूंगा ना, एक बार देख लीजिएगा, आपको आई थिंक देन यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दूसरा है कि एक और था क्या, हाँ आपने कहा टेक एक्सरसाइज. वी मस्ट टेक एक्सरसाइज, वी डोंट टेक एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज. तो that would be a correction. But apart from that, your clarity of sentences, the correctness of sentences, grammar, clarity, pronunciation, everything was very good. So for these two, there was one more which I remember. I've just noted it down correctly. And important. छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको. I'll give you the benefit of doubt. I have not noted it down properly. So net, I found only 2 mistakes. Every mistake will cost you 2 points. So that way, I'm taking out 4 points, and you have got 21 out of 25, which is the best performance so far. And again, I will not give you 21, I will actually give you 19. The reason being, because you had the luxury of knowing these things in advance, because our लोगों का हुआ है. So I'm giving you 19, which I can tell you it is 40% more than anybody else so far. Okay, तो अभी तक आपका गाड़ी बहुत सही चल रहा है. You have done very good. You are almost close to clearing the certification now, where you already have 2 segments remaining. Okay, तो चलिए segment 3 पे जाते हैं. Any question, बेटा? Any question, concern, complaint? No, sir. Okay. Segment 3 is about me giving you a topic and then you talking about it. तो आप ये बताइए, what are the things of your interest? Sports, politics, health and fitness, studies, politics, serials, family, कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो, जो चीज आपको which is of your interest, based on your choice of things. आप सोच के बोलिए किसके बारे में, आपको कौन सा चीज आपको किस बारे में बात करना अच्छा लगता है. Let's say if somebody asks me, I'll say I love talking about my kids, and I love talking about what I am doing for my kids of the society. तो उससे आप बोलिए आपको पसंद में क्या टॉपिक हो सकता है. हो सकता है उसका पसंद होगा कुकिंग, किसी का पसंद हो सकता है आर्ट, सिंगिंग और डांसिंग और एनी आर्ट, राइट. जो भी आपके पसंद का हो आप बताइए. I'll tell you what. Sir, environment. Sorry? Environment. Environment. Right? That's what you said, na? हाँ, okay. अच्छा, तो एनवायरनमेंट आपका टॉपिक है, मतलब एनवायरनमेंट आपको पसंद है, तो एनवायरनमेंट से हम टॉपिक सोचते हैं क्या होना चाहिए. And environment, you're not talking about the climate thing, right? Environment could be anything in your surrounding, right? It could be the आप मतलब पार्टिकल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं या सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. Sir, natural. नेचुरल, ओके, ठीक है, ओके.
ओके, तो आपका टॉपिक रहेगा व्हाट रोल एनवायरनमेंट प्लेज इन आवर लाइफ फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड Okay, द sir. फ्यूचर। तो आपका टॉपिक फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि व्हाट रोल एनवायरनमेंट प्लेज in our mental and health mental and physical health and deciding our future। तो आप सोच लीजिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यू हैव नेक्स्ट 2-3 मिनट्स और 4 मिनट्स और लेस, whenever you are ready। आप जो भी सोचेंगे, जो भी बोलना है, यू कैन कीप नोटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मतलब जो जो है, एंड वंस यू आर रेडी लेट मी नो। लेकिन आपके पास 3 से 4 मिनट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है? तो
sir. Yes, beta. Are you ready? Yes, sir. Okay. चलिए, go ahead. Environment plays very important role in our life. Hmm. Without environment, we don't live on Earth. Environment is very important for our physical and mental health because pure air in the morning give also feet. Environment in the environment also influence your stress level, which can Hmm. then have an impact on you physical and mental. We should Okay. So Rajni, एक काम करेंगे बेटा. You can turn off your video because I think your voice is getting distorted a little bit. थोड़ा network का load. हाँ, अभी अभी try कीजिए. so starting say नहीं, I heard initial 2-3 sentences, but if you want, you can start from beginning. That's okay. Either way is okay. environment plays a role in our life. Hmm. Without it, we cannot live in this earth. Environment is very Hmm. important physical and mental health. When pure air fills you in morning, he gives also fit in our body. The environment can also your level, which can Hmm. then have an impact on your physical and mental health. We know it very Hmm. well that tree is a part of our life, very important part of our life, Hmm. because he gives me many things. Without environment, we cannot exist in this earth. Hmm. And environment is very important for physical and mental health, Hmm. and we know it very well that environment is going to destroy point, and future we lack the benefit of environment. Hmm. So environment is very important in future because without environment we live like half years in this earth. Hmm. Okay. Thank you. All right. Hmm. So you have again impressed me with what you did. तो आपका बेस्ट पार्ट क्या है ना कि you have left behind your fear of speaking English long time ago. Okay, आपका मतलब वो जो एक होता ना कि भाई इंग्लिश से ऐसे दूरी नहीं है आपका. इंग्लिश यू फाइंड इट वेरी क्लोज टू योरसेल्फ. तो आपका सही बोले या गलत बोले आप बोलते हो, which is very important for communication. Okay, तो आपका वो जो fear of English है, that is not there, which is very nice. As expected, यहाँ पे this is a topic that you were not ready for. You only were given 2-3 minutes to prepare for it, and you still did a very good job. Uh, what I mean, let me talk about the feedback. First thing is, since it was a new topic, you did not have enough time. So I felt that you were still trying to stick to the structure, but there was little more preparation needed. Yeah, there was a more no, what you call uh, more organized attempt was kind of needed here. Okay, and that is why this I always say that no, this certification assessment is not going to be a cakewalk. It is going to remain as difficult as possible, so that when you actually score a perfect when you get a perfect score, you're actually perfect. So uh, I will deduct 5 points for things not being very organized, not following the same pattern, because I felt that no, we were kind of some of the times we were repeating the same sentence. Like environment is very important for us. Even if you say that 2, 3, 4 times, that that doesn't add weight to it. Okay, तो वो एक था. दूसरा था, there was one place you said that
we are moving towards destroyed point. That is probably not the right representation of something which is going to be destroyed, or that is going to be kind of impacted so very bad. So you will not say that we are moving towards a destroyed point. You can probably say that we are moving towards a point where environment will be damaged to an extent where it cannot be recovered. मतलब उसको there is nothing called destroyed point, right? मतलब ऐसा there is no terminology for it. So you have to, but you're still trying to convey that if we keep on toying with environment so much, so we are heading for something which is going to be very, very severe and very, very harmful for not only for our generation but for the future generations to come. Okay, so that was another point. Then you said no, there was something called, you said half years, which I'm not sure. You said that no, we all know that no, if something goes wrong, it will be half years. I think yes, you were probably trying to say that we are cutting short our lives by half if we continue doing bad things about the environment, and if we keep destroying or damaging the environment around us. I hope that's what you meant. Okay, Ragini, आपको सुनाई पड़ रहा है? You are हाँ. Yes, sir. Okay, okay. So you heard what I said, right? Yes, sir. Okay, okay. So basically, there were three small mistakes, and no, I will deduct 2 points each. So I'm taking out total 11 points out of it, but you have still scored 14. So 14 out of 25. So you have already cleared the beginner level certification. Okay. So I can congratulate you like this. तो आपने already beginner level certification clear कर लिया because you have scored 14 plus 19, that is 33, plus 20, that is 53. Okay. So you already scored 53 out of 75, and we still have one segment remaining. Okay. So I want to see how you do in that last segment, and that is what will decide whether you will stick to beginner or you are going to get certified for the intermediate level. Okay. तो अभी तक Yes. आपका परफॉर्मेंस शानदार रहा है, and as expected, I knew you are doing good, and you have potential for doing very good. So let's go to the fourth segment, which is an interview or a general discussion. Okay. So here Yes. it is going to be more like a casual talk between you and me. It could be on any topic. Even I have not thought what it could be. Okay. And based on the kind of conversation we are going to have, how you react to those conversation points or talking points, how thorough are you with your thoughts, how you articulate your sentences, how you respond to things, that is what will decide how much you are going to score here. Okay. So let's start this. So give me a minute to prepare and think what I'm going to drag you into. Okay. So we will talk about contribution of parents in our lives. So again, whatever we will talk about today, Ragini, it is only for the assessment purpose. It is not to kind of put our families, value, I mean, not to impact the value of the family or anything. It's just a discussion. Okay. If I say something which is not right, you can say that we will not talk about it. Okay. I mean, let's make sure that we are not compromising on value and respect for the family. It's just a discussion. Okay. So Rajini, tell me something about uh, what is that, like I shared, right? I'm from a very humble background. My parents were not very rich. We were we had limited resources, and with that only we survived, and then we figured out how do we make sure that we get education and we get food. So just curious to know, Rajini,
I mean, what does your family do? I mean, are you from farming background? Are you from from a background where parents are in government jobs and whatnot? Or you're doing business? What is the kind of background that your family has? So I And it's belong a to middle discussion. class family. Uh-huh. Yes, I am. Hmm. I belong to middle class family, Hmm. and my father and my mother also support in my study. Hmm. He always tells me, please don't worry, any situation, I will teach you. Hmm. Hmm. Because Okay. he knows very in this generation, education is very important for women. Hmm. Hmm. Okay. Okay. And That's good. So you did not tell me what does your parents do. I mean, I know your father and mother both are supporting you, and that's what every parents do, right? I mean, they always take care of their kids. So what do they do? Are they in the into farming or government job or business? so Uh-huh. my father is a driver. Oh, okay, okay. That's what I was trying to know. What kind of a profession she's into? Okay, so now, Ragini, I mean, I have huge respect for the parents from our society, right? Because we know that we don't get lot of we don't have a lot of resources. We have to survive with the minimum thing that we have. So Yes, sir. when did you start thinking about improving your English? Because I find your English being much better than what it was for me when I was small. So how did you start it? How did you start your English journey before joining my class? Actually, sir, when I did in science class, I think that English is very important for in this generation because anywhere I'm Hmm. going, I see that all people speak English. And Hmm. and future, I want to become an IAS officer. And without any Hmm. English paper, you cannot achieve any Hmm. success in any field. English is Hmm. compulsory in any competitive exams. So I Hmm. think Hmm. that English is very important. So please, so let me Hmm. Hmm. improve my English. Okay. No, so my question was more to know when did you start it? Was it in seventh grade, eighth grade, or you Actually, started after that? I started in ninth grade. Ninth grade. Okay. Okay. Good. Good. No, because I can see uh, before even joining the classes, you were doing some preparation before. Okay. So I can see that reflecting in your So now I responses study in or class what you 10. you're in tenth. Yeah, that is good. Yeah. So I mean, I can certainly see that. So my request to you here would be that keep your answers short because no long answers any discussion, right? It has to be like Yes. you will give your answers to the question or any discussion, but keep it to the point and see what extra element of information you can add for earning some credit points. Like an example. Okay, I'm just giving an example. When you said that no, uh, my father and mother, they always tell me that no, when you want to study, just study. I mean, uh, and I'll we will support you. You can add some more power to that or more respect in that by saying that my parents, even if they don't really have too much resources, but they have never felt me, they have never made me feel that I should cut down on my expenses for studies. They're ready to go, no, they're ready to spend as much money as needed for my education regardless of how much they have. So I'm blessed to have parents like them who are always ready to support, right?
Okay. So keep it one or two lines, but always try to find out where you will score some extra points by making your statements more what you call respectful or more impactful. Okay. Now, Rajini, why IAS officer? You said you want to become an IAS officer, but why? I mean, what is the reason for choosing IAS Because officer as a career I versus? I Sorry, go ahead. because I interested in politics. Okay. So I Okay. want to serve the country. Hmm. I want to serve the country, Hmm. and UPSC is a very tough exam in India. Hmm. But serving the country, see, And everything that we do, we are serving the country, right? I mean, let's say if I'm a teacher, I'm serving the country. If I'm a farmer, I'm producing food that for for people. I'm serving the country. If I'm in a government job, but then also I'm serving a in country. Hmm. in that situation, we have power and authority. So why Hmm. are like Now, teachers and other things, sir? hmm. So now you're coming to the point where you're saying that I need power and authority to change a lot of things. I can decide. Okay. In that Okay. situation, it's my duty to serve the country. Hmm. Hmm. Okay. Now, So it's my answer. So why? Hmm. No, again, I'm not trying to prove anything right or wrong. I'm just trying to get your understanding right with respect to why you have chosen a career. And I'm trying to learn from it also. See, when I was small, I wanted to be a doctor, but I did not have the Yes. skill. I mean, I did not courage to even see a tortoise cut open. I could not see that. I cannot see blood actually. That's my weakness. So then I gradually realized. So tell me one thing. At what age did you decide to become an IAS officer? Was it very recent or it was since you were a child? So please repeat again. I'm saying at what age did you decide to become an IAS officer? Was it recent or long time ago? When I study in when I study in 8th standard, then I decided I want to become an IAS officer in future. Okay, okay. Okay. So now tell me what is that you are doing to prepare yourself for those exams, because those exams are very tough, right? Very few people clear those exams. Okay, so Ragni dropped off. Let's see. Yeah, Ragni, can you hear me now? सॉरी सर एक्चुअली फोन आ गया था तो गलती गलती कोई बात नहीं, that's okay. No, so one last question actually. I was just trying to know. See, IS exams are very tough. There are very few people who clear it also. So what is that you're doing to prepare yourself better? Sir, please repeat again. I don't hear you. You okay? No, I was saying. See, IS exams are aspiration for a lot of people, right? It's a Yes, very prestigious job. yes, So, sir. what is that you're doing to prepare yourself for those exams? What preparation you're doing right now, or you will start it later? What is the plan? Sir, first, when I complete my graduation, Mm-hmm. I will prepare my UPSC exams. It's course of 1 years, Uh-huh. and sir, then Hmm. in that situation, sir, I I
follow the topper's rules. That's a Mm-hmm. UPSC is a very tough exam. We know it very well. Hmm. So I don't want to prepare with coaching. I want to prepare Hmm. myself. Hmm. So Okay. I I watch video YouTubes and I clear my topics and I make notes Hmm. Okay. and it So is basically, what you're saying is, it's just not about coaching; it's about structured myself. preparation for the exams. Okay. Yeah. Okay. All right. So I think we have spent good time, and we talked about a lot of things. Uh, Here also, I will kind of mention some of the things. Communication wise, pronunciation wise, it's all fine. But now, when it comes to interviews, you have to start framing your responses, your sentences in a more impressive way. Any discussion, right? So when you, let's say, when you talk about going for, when you're talking about IS exam, one of the Yes, sir. biggest thing that'll that is something that you would need to be prepared for would be interview, because interview is going to be the decider, right? Yes, sir. Whatever you do in PT and mains, when you go for interview, you make some small mistakes here and there. Everything Yes, that sir. you did, Interview is very tough. correct. So no, it's trust me, it's not tough. It's about being more organized. Okay, I will teach you guys the basic tricks of interviews also. Any interview, be it IS interview or be it a interview for a clerical job. Anything and every Yes. any and every interview has certain intent. You go to the interviews with a plan. You Yes, sir. have to always think of what are your strengths and how would you drag the interviewer to your strength. अगर आप कोई एक चीज में अच्छे हो, you can know, you or anybody in the world, right, cannot know everything, Yes, cannot sir. talk about any topic for forever. So you would know that, okay, these are my strength. You will identify your areas of strength, and then you Yes, will sir. figure out very smart moves for dragging your interviewer to your strength. ठीक है, आप उनको खींच के लाओगे उस टॉपिक पे जो आपका स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ पे आपके पास डेटा होना चाहिए. यू शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट व्हाट यू वांट टू से. यू शुड बी वेरी क्लियर कि भाई इस टॉपिक के बारे में बात करना है तो मेरे से बढ़िया कोई नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग इन एयर, आई हैव डन ऑल माय प्रिपरेशन. तो वो सब हम लोग सीखेंगे. सो बेसिकली इट्स अ जर्नी, राइट? सो कम्युनिकेशन और इंटरव्यू always remember is an exercise for extracting maximum information from you. तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये मान के चलो कि इंटरव्यूअर आपको फेल करने के लिए आपका इंटरव्यू नहीं कर रहा है. दैट Yes, पर्सन sir. इज ट्राइंग टू नो द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. आपका जिस भी जो भी इंटरव्यू कर रहा है वो जानना चाह रहा है कि आपके पास कितना नॉलेज बेस आपका कितना स्ट्रांग है, आप कितना प्रिपेयर्ड हो, आप किसी चीज को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, राइट? Yes, sir. और कितना इफेक्टिव हो आप कम्युनिकेशन के साथ में, आप जो जानते हो कितने अच्छे से बता पाते हो, एंड हाउ स्मार्ट यू आर for making that interview as your interview instead of being interviewer's interview. ठीक है? तो इंटरव्यू Yes, sir. एक आर्ट है, इसमें देयर इज नथिंग टफ अबाउट इट. ओके, मैं मतलब हर एक वीक, हर एक मंथ में 2 4 5 इंजीनियर लोग का इंटरव्यू करता हूँ रिक्रूटमेंट के लिए. अपनी कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है या हायरिंग होती है उसके लिए. तो वहां पे Yes, sir. यही बोलना होता है कि भाई इंटरव्यू आपको डराने धमकाने फेल करने के लिए नहीं है. इंटरव्यू इज एन एक्सरसाइज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू. तो हमेशा वो चीज ध्यान रखिए, इंटरव्यू डरावना चीज नहीं है. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज एक्चुअली. ठीक है, और तो आई कीप इट शॉर्ट नाउ. तो मुझे लगा कि कहीं कहीं पे सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ था, थोड़ा सा और भी हम पॉलिश करेंगे. और ये चूंकि हमारा लर्निंग एक्सरसाइज है तो वो करते रहेंगे. आपने जैसे कुछ जगह पे कहा आई वांट टू बिकेम एन आईएएस. You never want to become, because became is something that has happened in the past. You will say I want to become an IAS officer. Okay, Yes, likewise, sir. likewise, uh, आपने कहा कि when I study in grade 7, uh, I came up with this idea. You will say that when I was studying in that grade, that is when I realized for the first time that this is the career that I want to go after. तो आपको सेंटेंसेस जो है यहाँ पे ये रिस्पॉन्स है ना,
यहाँ पे देखिएगा कि आपको थोड़ा और पॉलिशिंग करेंगे, तो इंटरव्यू वाला स्किल जो है अभी डेवलप करना है आप लोग के लिए बहुत जल्दी, आप लोग 10th ग्रेड में ही हो, तो आई नो इंटरव्यू इज समथिंग नॉट इजी और नो योर कंफर्ट जोन एंड Sorry for my mistake, sir. अरे यू डोंट हैव टू से सॉरी बेटा, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर करेक्शन, बिकॉज ये इंटरव्यू तो कुछ नहीं है, ये तो दिस इज जस्ट अ प्रिपरेशन, राइट? अभी असली इंटरव्यू तो आपको लाइफ में और भी बहुत सा देना है, तो this is a Yes. stepping stone. I'm sure whatever I have told, whatever you will watch after this video is put on YouTube, you will collect some of the points and you'll start working on those. So we'll take that as an exercise, okay? So यहाँ पे I'm not giving you a lot of points. I'm giving you actually 12, half of the point, okay? That is primarily for communication skill, your confidence and the way you articulate things, ठीक है? So all put together, you have got uh, 26 plus 19 is 45 to 65. So you are in the top league of beginner certification. Okay, so you have cleared your certification, and you just have to work on those polishing some of those feedback that I've given, and you'll be all set for clearing intermediate certification in future. Okay. तो अभी आपका बिगिनर सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया है, वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, और बाकी वी विल टॉक अगेन लेटर, ऑलराइट? Thank you, sir. Yes, sir. गुड जॉब बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है? Yes, sir.